In December 2020, the Skill India has been established first center of excellence for the skill development in power sector in Gurgaon. In December 2020, the Skill India has established first center of the excellence of the skill development of the power sector in Gurgaon. T4, T3 hormones are secreted by which gland? Thyroid gland. T4, T3 hormones are secreted by which gland? Thyroid gland. T4, T3 hormones are secreted by thyroid gland. Tridothyramine and thymoxine are found by the thyroid gland using iodine present in our body. The thyroid gland is butterfly-shaped organ located in the base of your neck. It is a released hormones that control the metabolism. Two glands in the brain, the hypothalamus and the pituitary, communication to maintain T3 and T4 balance. In which year the second national policy was implemented? 2000. In which year the second national population policy was implemented? तो 2000. The government of India implemented the second national policy on population of February 2000. The immediately object of this policy is offer service deliver in integrated approach to improve the productivity, health and child care. The long term object of the policy is to achieve population stabilization by the year of 2045. Which is the international criminal code? The Hague, Netherlands. Sodium carbonate is also known as soda ash, and the industrial production of soda ash is done by which of the following process? तो Salivary process. किसके द्वारा होता है? Salivary process के द्वारा होता है. The sodium carbonate is also known as, जो सोडियम कार्बोनेट है उसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं. इट इज़ ए प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्लेवरी प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. स्लेवरी इज़ द फर्स्ट यूज़, पहले इसे स्लेवरी की यूज़ करते थे. इन दिस प्रोसेस क्या होता है? जो सोडियम कार्बोनेट इज़ द प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग हो, जो इन दी प्रोसेस जो सोडियम कार्बोनेट है वो प्रोड्यूस किया जाता है लाइम मिक्सिंग ऑफ लाइम स्टोन, सॉल्ट ब्रिंग एंड अमोनिया. सोडियम कार्बोनेट हैज़ वेरी डाइवर्स एप्लीकेशन. सम ऑफ द यूज्ड इन अल्कलाइन ऑफ लेक डिटर्जेंट, प्यूरिफाइड नॉन फेरियस एंड फेरियस ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन मोशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन फ्लो ए प्रोजेक्टाइल पैटर्न. फ्लो एज ए प्रोजेक्टाइल पैटर्न. कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ मोशन इन टू डायमेंशन flow as a projectile pattern. Projectile motion is the form of motion of the object and particles thrown are projected into air subjected to only acceleration due to the gravity. What is the Hisper Glacier located? हिस्पर ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? तो कराकोरम माउंटेन में. हिस्पर ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? कराकोरम माउंटेन में. हिस्पर ग्लेशियर लोकेटेड इन द कराकोरम माउंटेन ऑफ गिल्टेड बेलिस्तान, पाकिस्तान. वैन वाज द जिम कार्बोनेट स्टैब्लिश? 1936 में. जिम कार्बोनेट नेशनल कब स्टैब्लिश हुआ था? तो जिम कार्बोनेट 1936 में स्टैब्लिश हुआ था. पहले से हेलेनी इंटरनेशनल पार्क बोलते थे. इसका रीनेम एज ए राम गंगा. इन द मिड 1950 द नेम इज ए चेंज इज ए जिम कार्बोनेट. डिकोडेड मेमोरी ऑफ द जिम कार्बोनेट. वो डिस्कवर इंफ्रारेड विलियम हेल्किस. इंफ्रारेड विलियम हार्शेल. इंफ्रारेड रे विलियम हार्शेल. इंफ्रारे आर डिस्कवर बाय द विलियम हार्शेल. इंफ्रारेड आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ longer than visible light. Longer than visible light. It is generally invisible to the human eye. It is invisible in a human eyes. Some example of radiating, burning charcoal, hair, electric heater and fire. Gout is the cause the excess of which acid of the blood? Gout is the cause by the excess of uric acid in a blood. It is a type of arthritis which is a cause pain, swelling and stiffen in a joint. Guts are the responsible for hypertension or obesity, cardiovascular disease. The symptom of the gout are due to the formation of uric acid crystalline in a joint. Body response of them. Which of the following element not lethal in archaeological remain? तो कपल ब्यूरन मिला है, पर्सन सील मिला है, हर्बिस मिला है. द फाइनल वेराइटी ऑफ ब्यूरन. कपल इवेंट करली क्या है? कपल ब्यूरनल present seal harbors are the element found in the lothal evidence culture of the rise in a found in a lothal.
बट वेराइटी ऑफ वेरिएशन नहीं पाया गया था। नेक्स्ट है द रूलर ऑफ बंगाल गेव अ पोर्शन ऑफ द उड़ीसा टू द महाराष्ट्र। द रूलर ऑफ बंगाल गेव अ पोर्शन ऑफ द उड़ीसा टू द मराठास तो अलवीरिंद खान द मराठास इन्वोड अ बंगाल 6 टाइम फ्रॉम अगस्त 1741 टू मई 75। नवाब अलवरदी खान succeed a resistance in Alwadi Khan succeed the realistic of the invasion. The invasion come to end with the signing of the peace treaty between the Maratha Empire and Nawab of the Bengal Alvira Khan. This established a Maratha supported government in Odisha under nominal control of the Nawab Bengal. Sant Kabir was the discipline of the womb. Ramanand. Kabir is widely believed in the become of the first disciple of Bhakti poet Sant Ramanand. Swami Ramanand. Who among the following considered as a political guru of Mahatma Gandhi? Gopal Krishna Gokhale. Which of the organization established outside of the India? East India Association. Which of the organization was established outside of the India? East India Association. The East India Association was founded by Dadabhai Naoroji 1886 in the collaboration with the Indian and retired British official in London. It is a superstayed the London Indian Society and when platform were discussing matter idea about the idea and provided representation for Indian to the government. What is the name of the second layer of the earth? 3 in concentric layer. तो क्या होते हैं थर्ड लेयर क्या है? सीमा है जिसका नाम है सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है. वाइल ओशन हैवी सिलिकेट the continent are composed lighter silicate silica and aluminum also called Cl while the ocean the name of second layer of the 3 concentric layer while the ocean name heavier silicate silica and magnesium is called the Sima. It is composed by the nickel and iron. Sima is the name of second layer of the earth 3 concentric layer. The day to day condition of the atmosphere at a place with respect of the temperature, humidity, rainfall, winds, it is called a weather at the place, weather or the place. In which of the following regional midnight sun is visible? In Arctic. कौन सा प्लेस है जहाँ पे मिडनाइट के अंदर ही सन विजिबल होता है? वो है आर्कटिक एरिया. In Arctic area, the midnight sun is a natural phenomenon that occur in the summer month in the place of north of the Arctic Circle or north south of the Antarctic Circle. When north में आर्कटिक सर्कल में होता है, साउथ में अंटार्कटिका सर्कल में. When the sun remain visible in the local midnight, according to the article, according to the Dr. Bhimrao Ambedkar, which article is the most important article of the Indian Constitution? So 32, article 32 most important according to the article, according to the Ambedkar article 32 is the most important article of the Indian Constitution. 10 अप्रैल 2017 लोकसभा बिल पास कॉन्स्टिट्यूशन 123 अमेंडमेंट बिल 2017. द बिल सीक टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस. 123 अमेंडमेंट हुआ था 2013 में. एक लोकसभा में एक पास हुआ था एक कॉन्स्टिट्यूशन 123 अमेंडमेंट बिल था जो 2017 में पास हुआ था. वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस था नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस.